Good morning, students. How are you? I hope you all are good and safe at home and doing study every day regularly. Yes, dear students. Yesterday we have completed theoretical part of this chapter and today is the turn for the numerical part. Yes, dear student, as I told you earlier that a 4-mark numerical question, combined question from both the chapter number 7 and chapter number 8. Both are correlated and now we will solve the numerical part. Yesterday we have completed the multiplier process. So let's begin with the multiplier process because it will helpful to find the numerical part also. Yes, dear students, as investment change, then ultimately income will also change, and as income changes, consumption level is also changes, and when consumption changes, level of consumption changes, it changes the level of income, because consumption, when we spend some money for the consumption, it is the income for the seller or producer. So there is a simple process. Okay, so now let's start with the next question. What will be the value of multiplier if entire additional income is consumed into additional consumption? It means suppose I having 100 rupees additional income and entire additional income I spend on consumption. इट मीन्स जो भी मैंने इनकम अर्न की है वो पूरी की पूरी मैंने स्पेंड कर दी है. इट मीन्स, और एडिशनल कंजम्पशन मीन्स मार्जिनल परपोसिटी टू कंज्यूम. इट मीन्स हाउ मच पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम वी कंज्यूम्ड. ओके, सो MPC, as you know that change in C upon change in Y. So here entire income is consumed. Suppose income is 100 and we consumed entire income on consumption. So 100 divided by 100 equals to 1. Here MPC equals to 1. Okay, and you know very well that there is a relation between MPC and multiplier. You have to find the multiplier here. What is the value of multiplier? This is the simple question. हमें multiplier की value निकालनी. It means हमें K की value find out करनी है. So just recall the 3 formulas of K. I told you in the earlier videos. And lastly we discuss about that. बेटा we have 3 formula to find out K. K calculate करने के हमारे पास 3 formula. Once recall again. First is K equals to change in. First is K equals to change in Y upon change in I. Investment. Okay. Second, K equals to 1 upon 1 minus MPC. So it means there is a relation between multiplier and MPC. And the third one is K equals to 1 upon MPS, because 1 minus MPC means MPS. Okay, we have already discussed about that. So now, MPC is 1. So find out the value of K. We know that K equals to 1 upon 1 minus MPC. So 1 upon 1 minus MPC is 1 we have calculated, because entire additional income is consumed. So 1 divided by 1 is divided by 0. It means answer is infinity. If the equation is 0 upon 1, then answer will be 0. But अगर 0 किसी के भी upon में होगा बेटा, तो answer will be infinity. Okay, simple. Next question. Third question. In an economy, investment expenditure increased by 400. It means it is our additional investment. That is 400. Okay. And marginal propensity to consume is 0.8. It means MPC already given 0.8. So calculate increase in income and increase in saving. Increase in income and increase in saving हमें calculate करना है. So dear student, very easy. If we can calculate K, अगर हम multiplier calculate कर ले with the help of MPC, क्योंकि हमें पता है MPC से K कैलकुलेट हो जाएगा, बिकॉज K इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन MPC. और अगर हमारे पास K की वैल्यू आ जाए, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला K इक्वल्स टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I. K हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, चेंज इन I ऑलरेडी गिवन है, तो चेंज इन Y क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ कैलकुलेट K equals to, we know that 1 upon 1 minus MPC. So 1 upon 1 minus MPC is already given 0.8. So 1 minus 0.8 means 1 upon 0.2. पॉइंट हटाने के लिए 0 ऊपर लगाइए तो K की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है बेटा. ओके, सो नाउ कैलकुलेट इन योर नोटबुक ऑल्सो. सो नाउ हमें पता है बिकॉज MPS किसके इक्वल होता है,
1 माइनस MPC इट मीन्स 0.2. सो नो मैटर अगर आप इसे शो करते हैं नहीं करते, देर इज नो यूज ऑफ दिस लाइन बिकॉज वी आर सिंपली कैलकुलेटिंग K विद द हेल्प ऑफ MPC. ओके, सो no use of MPS. 5. Okay, but MPS can be helpful to calculate the additional savings. Okay, so now increase in income you can calculate. Now put the value of K. So now K equals to change in Y upon change in I. Simple. K 5 already we have calculated, change in Y is not known, change in I is given 400. Now cross multiply. When you cross multiply, then change in Y equals to 400 into 5. It will be 2000. Clear? So like that you can calculate change in Y. अब हमें change in Y पता चल गया है. Okay, so change in Y हमारे पास कितना आ गया है? 2000 करोड़ आ गया है. So now saving, simple, multiply MPS by चेंज इन वाई कि इनकम का कितना पार्ट, अगर आप कंजम्पशन कैलकुलेट के माइनस कर दोगे इन चेंज इन इनकम में से तो भी कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर सिंपली आप MPS से मल्टीप्लाई कर दोगे, सपोज 2000 इनकम है और उस इनकम में से 0.2 जो है वो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, सेव कर रही हूँ. ओके, बिकॉज 0.8 तो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, दैट इज MPC. तो बचा कितना, 0.2 बचा, वो मैं सेव कर रही हूँ. तो मुझे एडिशनल सेविंग्स ही कैलकुलेट करना है. तो 2000 मल्टीप्लाई 0.2 इट विल बी 400. So like that you can calculate simply value of increase in income and increase in saving. Okay, so now and one more thing that you can learn in second approach of equilibrium, S equals to I. Remind that thing. So it means change in S will be equals to change in I. Simple. 400 is change in I, so change in S कितना होगा, change in S will be 400. You can calculate like this also. Okay, yes. Now move to the next point, and next point is next question. Next point is our next question. Yes, here is next question. Yes, dear student, in an economy government makes some additional investment. Government ने कुछ additional investment की है. Okay, find the value of, फाइंड इट्स वैल्यू. हमें ये कैलकुलेट करना है व्हेन MPC आपको दिया हुआ है, MPC इज 0.5 एंड इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन इनकम मीन्स चेंज इन वाई ऑलरेडी गिवन 1000. सो हाउ मैनी ऑफ यू कैन कैलकुलेट, आप में से कितने बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो MPC इज गिवन हियर डियर स्टूडेंट, सो विद द हेल्प ऑफ MPC यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K. आप मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला लगा लेंगे K इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC. सिंपल. अब जैसे K की वैल्यू आएगी, नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला K इक्वल्स टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I. चेंज इन Y ऑलरेडी गिवन, और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन कैलकुलेट चेंज इन I. लुक एट हियर. Yes, so we have two things. MPC we have, MPC already given, that is 0.5, and additional income given 1000. So we know that K equals to change in Y upon change in I, but we also know that K equals to 1 minus MPC, 1 upon 1 minus MPC. So MPC is given 1 upon 1 minus MPC, it means 0.2, 0.5. तो 1 upon 0.5 means 2. पॉइंट हटाने के लिए आप ऊपर 0 लगाओगे तो 5 2s are 10. Clear? So now the value of K is 2. So now put the value of K in first equation. अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे. It means 2 equals to, and in आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1000 एडिशनल इनकम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज नॉट नोन. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 चेंज इन I इक्वल्स टू 1000 एंड चेंज इन I कितना होगा, 1000 डिवाइड बाय 2. इट मीन्स सिंपली 500. कितना आ जाएगा बेटा, 500 आ जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. तो विद द हेल्प ऑफ K, विद द हेल्प ऑफ MPC यू कैन कैलकुलेट फर्स्ट K, फर्स्ट स्टेप, और विद द हेल्प ऑफ दिस K, कैलकुलेटेड K, यू कैन कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट. क्लियर डियर स्टूडेंट? ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ MPC इक्वल्स टू 0.75, अगर MPC 0.75 है, सो हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाय 600. ओके, एंड multiplier, find the value of multiplier also. It means we have to calculate two thing here. MPC 0.75,
तो मल्टीप्लायर तो इजीली कैलकुलेट हो ही जाएगा, बिकॉज k इक्वल्स टू 1 माइनस MPC. ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ MPC 1/1 minus MPC, it means 0.75, so it will be 1/0.25, it means the value is 4. Clear? So first point is calculated. Second, how much additional investment is required? It means change in I we have to calculate, and change in Y already given 600. Now put the value of K in second formula. K equals to, we know, change in Y upon change in I. K we have already calculated 4. Clear? Change in Y already given 600. Now put the value K equals to change in Y upon change in I. 4 equals to change in Y is 600 and change in I is not given. So now change in I equals to 600 upon 4. It means 150 is answer. 150 is answer. So beta, like that you can calculate the value of multiplier and other points like change in investment, change in income, MPC. You can calculate anything. So I think enough for the today. You have to calculate all the values accordingly and do all the given questions which we discussed in the video in your fair notebook. Tomorrow we will discuss about the unsolved numerical questions, okay, CBSE questions from your book. Okay dear student, so stay blessed, stay safe at home.